Hello everyone, very good evening and welcome to Prep Funda. This is Sanjay Rathi. How are you guys? Today's topic is two-port network. Okay, and that is part of concepts with PYQ series. Now this is important for electronics, electrical and instrumentation branch, and this is for GATE 2025 and 2026 preparation guys. तो कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों को, कैसा लग रहा है क्वेश्चन बनाकर? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट? तो जरा देख लीजिएगा. ओके देन. तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टू पोर्ट नेटवर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सीरीज? वी आर डूइंग रिवीजन और वी आर गेटिंग कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट्स बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वी आर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो थियोरी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड वी आर गेटिंग कमांड ओवर दैट. तो दैट इज द सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट. तो चलिए, और सबसे जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है ना, वो भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो चलिए देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हैं फ्रॉम टू पोर्ट नेटवर्क. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव मी 1 minute. This is my introduction. Myself Sanjay Rathi, 24 years of teaching experience, and these are my ranks in engineering services exam that is conducted by UPSC. Okay, and that is my telegram channel Electronics by Sanjay Rathi. That link is given in description, and just after the class I will upload the PDF on my app, that is what Prep Funda by Sanjay Rathi. So you can install the app from Google Play Store. Link is given in description, where PDF, notes, free content are available. Tomorrow we are going to arrange one session on questions from basics of network. Right? Questions from basics of network from standard textbook. So sharp at 11 AM you can join. Okay? So morning 11 AM on our app. That is Prep Funda. Link is given in description. Install it now. आप अभी इंस्टॉल कर सकते हैं और कल 11 बजे आइए, जहां पर हम खूब सारे क्वेश्चंस बनाएंगे. एंड इफ यू हैव डाउट्स, सपोज यू वांट टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस, तो प्लीज सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. आई विल जस्ट शेयर द व्हाट्सएप नंबर और ऑन टेलीग्राम चैनल, so that we can discuss those questions. Right? I will try to include those questions in my coming sessions guys. Tomorrow 11 AM Saturday weekend का enjoy कीजिए. Then and that session will be mostly in English voice. Okay? Then next thing, now this is the first question in your screen guys. Try to solve this one. First question: the admittance parameter y12 in the two port network in the figure is. What is the admittance parameter y12? ठीक है, क्या होगा बोलो? y12. So one by one we will discuss all the parameters: y parameter, z parameter, h parameter, abcd parameter, and you will get the idea about all these parameters guys. Okay, then Monday we will arrange one session that is on assignments from 4 sessions, last 4 sessions. If you are going to give the response for that, then I will continue with the new topics, that is what is steady state analysis of sinusoidal signal, right? Phasor, how to draw the phasor, power factors, power triangle, complex power. Okay, तो इन सब पर बनाएंगे. रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस. तो टेल मी, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस? क्या होगा? देखो, एडमिटेंस पैरामीटर्स y12 in the two port network is. So when I am talking about the admittance parameter, watch this. This is the even means what V1. That is the question in 2001 only of 1 marks. Again, students are doing silly mistake in this question. What is the silly mistake? We will check. For example, that is the admittance parameter y12. So you can write the equation I1 is equal to y11 V1 plus y12 V2, right? And I2 is equal to y21 V1 plus y22 V2.
So what is the y12? This is the y12. So what is the y12? Y12 is nothing but I1 upon V2 with V10. V10 means what? Input port is what? Short circuited. When the voltage is 0, then we can say the input port is short circuited. This is the input port and that is the output port. This is I2, this is V2, this is V1, this is I1. It is the I1 upon V2 with V10 means input short circuited, and that's why these are called short circuit parameters. That is Y parameters. Okay. Now what is required here? Y12. So you can find by making the V10. V1 means here it is the even. When this arrow is given, this is plus, this is minus. Towards plus, it is arrow sign, this is plus, that is minus. In place of V1, it is V1 is given. In place of V2, V2 is given. And then when I am going to make it what? 0, short circuited. Short circuit. The first method, then second method, directly from the pi network you can find. From the pi network you can also find, but just focus on that. Then okay, first make it short circuit. So what about this 5 ohm? It will become short circuited 0. That's why this I1 will not pass through this 5 ohm resistor. This I1 will go through the 20 ohm and then 10 ohm. But remember guys, I1 is 0, but I2 is not 0, right? So what will happen? At this point, that current I1 will flow as well as I2 will flow. And what is the current here? I1 plus I2. I1 plus I2. Now from this you have to find the relation. What is the relation between I1 upon V2? So what is the relation between I1 upon what? V2. तो यहां से देखो आपका ये करंट जा रहा है और अब आप एक ये मालूम है कि आपको 0 लिख सकते हो. तो you will get the relation between what? I1 and I2. How we can get the relation between I1 and I2? From this. This is a KVL. So you can write a KVL here. This is the 20 times of I1 plus, this is the 20 times of I1 plus 10 times of I1 plus I2. That is equal to 0. This is the 20 plus 30 हो गया 30 I1 plus 10 I2 is equal to 0. So what is the I2 is equal to minus 3 times of I1. I2 is equal to minus 3 times of I1. Now you can write what is the E2 is equal to. E2, it is the voltage across this, so 10 times of I1 plus I2. 10 times of I1 plus I2. And what is the I2? Minus 3 times of I1. Minus 3 times of I1. And that's why it will become minus 20 I1. So E2 by I1, यहाँ I1 by V2 क्या आ रहा है? 1 by 20. We have to find the I1 by E2. I1 by E2 is equal to minus 1 by 20 means minus 0.05 what? Siemens. 0.05 Siemens, and that is the answer for this particular question. है कि नहीं भाई? पहले तो आंसर चेक करो, फिर दूसरे मेथड से हम वेरीफाई भी करेंगे. इसको बहुत ही इजी मेथड भी है. minus 0.05 मोह सीमेंस और मोह. तो दैट इज द आंसर सी. तो ये आंसर है जिससे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ y12. Definition of y12, and we are using that concept. We are making the V10, right? E10, or then we are getting the relation between I1 and I2, and then we are finding the what is the I1 upon E2. What is the second method? It is a pi network, guys. It is a pi network. So I think one student have given the answer, right? Everyone try to give the answer for all these questions. Okay. So basically it is a pi network. So for pi network is the standard network for what? Y parameter, right? So now second thing, so we can directly find the Y parameters. What is the Y parameters? YA plus YB minus YB minus YB
YB plus YC. What is the YA plus YB? This is the YA. This is the YB. And that is the YC. So normally students are doing the silly mistakes. They are directly writing Y12 is equal to what? Minus YB. They are putting the 20. But by ये MCQ है, ये क्या है? MCQ है. That's why we are having the answer. 4 options and there is a 20. There is no 20. Suppose it is a numerical answer type question, then you will give the answer what 20. That is wrong. Because first of all you have to convert it into what? Admittance. So what is this? It is a 20 ohm. So what is the YB? 1 by 20 mho. 1 by 10 mho. 1 by 5 mho. So this is what? YA plus YB. So you have to add this 1 by 5 plus 1 by 20. 1 by 5 plus 1 by 20. What is the minus YB? Minus 1 by 20. Minus YB minus 1 by 20. YB plus YC. 1 by 20 plus 1 by 10. 1 by 20 plus 1 by 10. These all are the 4 Y parameters, and what is required? YB. That is what? Minus 1 by 20. Y12. This is the Y11, Y12, Y21, Y22. So Y12 is minus 120. Directly you can say. So normally in exam you have to use this formula. Pi network and standard formula for pi network. Okay, tell me guys whether this network is reciprocal or non-reciprocal. Right? Whether this network is reciprocal or non-reciprocal. Y parameters. Y parameters. So reciprocal. Think about it and try to give me the answer. First of all, if you are watching the recorded lectures, then pause the video. Think about it. Whether it is reciprocal or non-reciprocal, then continue with this video. तो everyone जो live है वो बताए comments में. तो if y12 is equal to y21, if y12 is equal to y21, that is minus 1 by 20 minus 1 by 20, then that network is called what? Reciprocal network, and that's why this network is the reciprocal network. Okay. और वैसे भी प्योरली resistive network, it is, if it is any purely resistive network or we are having the passive elements only, then definitely it will be what? Reciprocal network. So reciprocal. If suppose there are dependent sources, then there is problem. Okay, there is no dependent sources, only resistive network, so definitely it is a reciprocal network. Is it symmetrical network? For symmetrical network you have to check what? Y11 and Y22. Y11 and Y22. If Y11 and Y22 are equal, then we can say it is a symmetrical, electrically symmetrical network. So वो तो अभी दिख नहीं रहा है. So on. So this is about the Y parameters, guys. So Y parameters, and that is what? Pi network. These are the standard formula. Now second question. Second question on Z parameters. Okay. Second question on Z parameters. This is the quick revision of Y parameter, then Z parameter. Z parameters are also called open circuit parameters. The Z parameters Z11 and Z21 for the two-port network in the figure are. चलो बताओ तो सही, आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन बनाने की. What are the Z parameters? Now Z parameters, two things are required: Z11 and Z21. Z11 and Z21. Now think about it and give me the answer. What will be the answer for this particular question, guys? Tell me. Yes, please. चलिए बताइए जरा. अब देखो, what are the Z parameters? V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to Z21 I1
plus Z22 I2. For example, if you want to find the Z11, that will become V1 upon I1 with I2 is equal to 0. And if you want to make the I2 output current 0, then you have to make it open circuit. And that's why these are called open circuit parameters. क्या बोलते हैं इसके? Open circuit parameters बोला जाता है. Now, if it is a open circuit parameters, now you have to find what Z11, Z21 and so on. So, what is the Z11? Already I have written V1 by I1 with I2 is equal to 0. What is the Z21? Again, this is the Z21. So, Z21 is nothing but V2 upon I1 with I2 is equal to 0. So, in the both the cases, condition is same. I2 should be equal to what? 0. If suppose you are going to make the I2 0, then what is the relation between V1 and I? Here again, this is the V1 and this is the V2. This is plus, this is minus, this is plus, this is minus. Now, for this question, this is I1. So, what is the current here? I1 plus I2. But what is the condition? I2 should be equal to 0. So, what is the current here? I1 only. What is the current here? I1. And now you can write a relation from this point to this point. Very, very simple question. What is the E1? 2 times of I1 plus 4 times of I1 minus 10 times of E1. Then it will become 11 E1. Here it will become 6 I1. So what is the E1 upon I1? E1 upon I1 is nothing but 6 by 11. And E1 upon I1 is Z11 with I2 is equal to 0. It is a Z11. So now Z11 is 6 upon 11. So out of these two, one is correct. This is wrong. This is wrong. Check my calculation, guys, because it is a minus 6 by 11 only. Minus 6 by 11. Right, we have written like this. This is the E1 is equal to 2 times of I1 plus 4 times of I1 minus 10 times of E1. That will become 11 and this is the 6. Yes. Now, if you want to find the relation between E2, then write a KVL in this loop. When I am writing the KVL in this loop, from this point to this point, then you can write E2 is equal to E2 is equal to 4 times of I1 minus 10 times of E1. 4 times of I1 minus 10 times of E1. And what is the E1 is equal to 6 by 11 times of I1. So E2 is equal to, you can write 4 times of I1 minus 10 into 6 by 11 times of I1. ये कहां से आया? यहां से 6 by 11 times of I1. Now, E2 is equal to, you can take 11 as the LCM. It will become 44 minus 60 I1. So, what is the E2 by I1? This is nothing but Z21 minus 16 by 11 ohm. इसमें सबकी यूनिट ओम है ना? This is the ohm. This is also ohm. And that's why it is called Z parameters or what open circuit parameters. Open circuit parameters. तो ये है. चलो आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ इसका इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा होता है? टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क. तो देखो आंसर जो आ रहा है, दैट आंसर इज 6 by 11 and minus 16 by 11 C. 6 by 11 and 16 by 11. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. राइट, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ओके, इफ यू हैव एनी कमेंट्स और एनी सजेशन, देन यस यू कैन गिव on my telegram channel or on comments box, right, or on our app. We are having number of free content as well as we are taking regular classes. So yes, you can install app now. Link is given in description. Okay, and go through the notes and content. We are not giving the all the contents or some contents are relevant, some contents are what redundant. तो garbage नहीं करना. ऐसा नहीं, दिमाग खाली होगा ना तो अच्छे से पढ़ाई होगी. पता चला आपने बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो कलेक्ट करते जा रहे हो. अभी सबसे बड़ी बीमारी यही है
इतना ज्यादा फ्री कंटेंट है कि आप सब जगह से कलेक्ट करते जा रहे हो, और आपकी डिजिटल लाइब्रेरी अगर व्यवस्थित नहीं है, then it will become very 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 difficult for you to maintain all these courses. इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां से स्टार्ट करें, एंड करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए उतना ही आप आगे बढ़िए जितना आप संभाल सकते हो, नहीं तो पता चला दुनिया में बहुत सजेशन देने वाले हैं और बहुत सारा बुक्स और बहुत सारा कंटेंट पूरा फ्री में बांट रहा है, तो आप फ्री में लीजिए और फिर आपकी हालत क्या होगी वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो समझना है, वो आपको बैलेंस करना है, वो आपके अपने अपने कॉन्सेप्ट से अपना दिमाग लगा के बैलेंस करना है। वी ऑल आर इंजीनियर्स, मैं भी इंजीनियर्स, आप भी समझदारी से काम लीजिएगा। ये तो पता चला आप परेशान हो गए। आप देखते जरा, राइट, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। ABCD पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल n/1 ट्रांसफॉर्मर शोन इन द फिगर। देखो मैंने थर्ड जो क्वेश्चन चूज किया ना, दैट इज फ्रॉम ABCD पैरामीटर्स। तो आई विल आल्सो सॉल्व क्वेश्चन ऑन व्हाट हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट, Z, Y, ABCD and what hybrid parameter, that is H parameters. Okay, and we will solve question on what dependent sources also. Wait for that. तो देखिए जरा, और साथ में भाई लिंक शेयर कर लीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देन अब आते हैं हम ABCD. व्हाट इज द ABCD पैरामीटर? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टू पोर्ट नेटवर्क, then remember what is the direction. Normally we are using the direction I1 inside, I2 inside, this is V2, this is V1. Then we can say V1 is equal to AV2 minus BI2, and I1 is equal to CV2 minus DI2. This is called ABCD parameter, right? ABCD parameter. But here the transformer is given. Here transformer is given, and then how we can find the ABCD parameter with the transformer? Okay, what will be the answer? Tell me. If the transformer is given, A parameter is given n, B parameter is given as 0, C parameter is given as 0, D parameter is x, and you have to find the x only. Right? Already 3 parameters are given, only you have to find the x, and what is the x here? D. So what is the D? D is minus of I1 upon I2 with V2 is equal to 0. Minus of I1 upon I2 with V2 is equal to what? 0. Now, if you are going to apply this concept, then you have to find a ratio of what? I1 and I2 only. I1 and I2 only. ओके, तो अब कैसे बनाना है ये देखो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, तो वी कैन राइट V1 upon V2 is equal to N1 upon N2. Directly you can write this equation. V1 upon V2 is equal to N1 upon N2, and what is the N1? N by 1. N1 is N, and that is the N2 is 1. This is plus minus plus minus. Then you can write V1 is equal to NV2. Was finished. Now you can compare with V1 is equal to AV2 minus BI2. What you will get? A is equal to N, B is equal to 0. A is equal to N, B is equal to 0. So this is the A is equal to N, B is equal to 0 here. Watch this. A is equal to N, B is equal to 0. Now, according to turn ratio, I1 upon I2 is equal to what? N2 by N1. N2 by N1 transformer, and this will become 1 by N. This will become what? 1 by N. So what is the 1 by N, guys? This is the current I1 upon I2. Then you can write I1 upon I2. So what is the I1 is equal to 1 by N times of I2. Now when we are comparing it what? I1 is equal to
CV2 minus DI2. So what is the C here? 0, because there is no coefficient of V2. And what is the D here? You can say minus 1 by n when we are comparing. Minus 1 by n. So go through the answers first of all. Go through the answers, guys. There is no sign. There is no sign. Because why there is no sign it is given? Because there is no dot convention. If there is no dot convention, we can't say whether the relation is positive or what negative. And that's why sign is not given. So what is the answer? 1 by n, simple. 1 by n. This one. ठीक है, ये आ गया रिलेशन, यहां से आपको पता चल रहा है AV2 माइनस BI2. एनी डाउट? सबके सब भाई जरा अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दीजिएगा. ये लाइव लेना है और यू कैन सजेस्ट गाइस. सर 7 सब्जेक्ट रेडी कर लिया हूं. Sir Joy, already you have prepared what 7 subjects, right? And your branch is branch. Please mention your branch. आपकी ब्रांच क्या है? और देखो, और लास्ट ईयर मैं आपको अभी पर्सनली आप मुझे अपना बायोडाटा अगर भेजेंगे कि 9899400096 दैट इफ यू हैव गिवन द गेट 2024 2023 और इट इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे आप बताओ कि कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स से आप लैग कर गए, प्रीवियस रैंक क्या थी अगर आपने दिया है तो. और फिर आप 7 सब्जेक्ट प्रिपेयर तो कर लिया आपने, लेकिन किस स्टैंडर्ड पे प्रिपेयर किया है, कैसा है आपका, क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान देना है. अगर आपने उतना ध्यान दिया तो आप ना एकदम से सीधा टॉप रैंक अचीव करोगे. जैसा आप प्रोफाइल बता रहे हो, ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड द 7 सब्जेक्ट्स, तो अभी जितने महीने बचे हुए हैं यू कैन गेट द टॉप रैंक, अंडर 10 रैंक, राइट. लेकिन वो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिपरेशन, किस लेवल तक के आपने प्रिपेयर किया है, यू हैव टू डिसाइड. वो मुझसे डिस्कस करो आप. तो मैं आपको कुछ भी देखो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, नथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज दिस टाइम वी वांट जस्ट व्हाट रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स कैसे आता है, क्यों ओनली 18% स्टूडेंट्स मेयरली क्वालिफाई करते हैं, सब फेल हो जाते हैं. तो उसको बार बार हम लोगों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि इतना कंफ्यूज मत होइए. 10 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पता नहीं कितने सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है. तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उसको फोकस करना, हमारा टारगेट है कि वो फोकस होकर पढ़ाई करें, रिलेवेंट चीजें पढ़ें, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेवेंट है. तो आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू. 1 by n इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. अब आते हैं जरा, नॉर्मली होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर में ना बाहर की तरफ शो करता है ये वाला I2, लेकिन ये क्या है, अंदर की तरफ शो किया हुआ है. अंदर की तरफ शो किया हुआ है तो कोई बोल सकता है सर क्या मैं इस रिलेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस, आप लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज नो डॉट कन्वेंशन ना, और इन आंसर इन 4 ऑप्शन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव आंसर, and that's why we are saying that 1 by n. Otherwise it is inside, then what is the relation, that is you can put the minus n and then you will get the minus 1 by n. Then when we are comparing with the d, you will get the 1 by n. But okay, otherwise in particular question they will mention. So this is about the ABCD parameter guys. अब हम लोग H पैरामीटर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड जस्ट आई वांट टू गिव वन इंफॉर्मेशन. तो ये है, ओके, यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, राइट. तो व्हाट अबाउट द कोर सब्जेक्ट, यू हैव प्रिपेयर्ड द कोर सब्जेक्ट और व्हाट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट. कोर मीन्स योर मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट मेजरमेंट, दीज आर द कोर सब्जेक्ट. एंड बट लास्ट ईयर number of students have solved questions from what extra, means what, network, analog, digital, okay, control system, maths, aptitude, and they got the good rank. क्योंकि मशीन पावर सिस्टम के इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे कि बना ही नहीं पा रहे थे, तो साइड के सब्जेक्ट से बना लो. ये देखो, in the H parameter model of the 2-port network given in the figure, the value of H22 is, what is the value of H22 in 2014? It is of 2 mark question set 2. H parameter, right, you have to find now. So please try to solve. Just I want to give one information, then I will solve this question. क्या है वो,
ओके, अब देखो जरा, just we have started our course, guys. That will be in English. Okay. So this is a countdown course, crash course, special 5 for electrical instruments. The number of students asked, sir, what will be the language? So just I want to say that will be in English. So if you want to join, then yes, you can communicate with me. Now here I am going to cover 5 subjects for electronics, 5 subjects for electrical, all by me: network, analog, digital, control system, and EDC. Because we have limited time, and that's why in limited time I can cover only 5 subjects. Then you can use this coupon, right? And guys, for electrical student, network, analog, digital, control system, and TMFT. Okay. And the weightage of these subjects you can judge. Already in my session already I have given the weightage of this subject. Today again we have the what? Demo classes, guys. Today again we have demo classes, that is on what? 14th of September. If you want to solve some important numericals, you can join morning at 11 a.m. free class on our app, and app link is given in description. Install now and go through the content, and tomorrow try to attend. Or if you have some questions, if you have some doubts from the basics of the network, you can put here, or on my Telegram channel. I will try to arrange in my session, right? I will try to give the answer for all your doubts there. So 11 a.m. free classes, link is in app. तो आप जाओगे सीधा आपको लिंक मिल जाएगा. फ्री कोर्सेज में जाइए, काउंटडाउन कोर्सेज में जाइए, यू विल गेट द लिंक. तो ये है काउंटडाउन कोर्सेज, and these are the 5 subjects. You will get the idea about the fee structure and so on. But remember, that will be in English. First, second thing, English मतलब जो इंग्लिश मीडियम है ना, जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हिंदी वालों के लिए वो तो आप मैच कर जाओगे. Second thing, I am going to solve what? Important questions. I am going to give you the important concepts. If you have the doubts, I will clear your doubts. Right? आपसे इंटरेक्ट करके हम लोग डाउट को क्लियर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब आपको लगता है कि कहीं कुछ डाउट रह गया है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कुछ आपको लगता है कि यार प्रिपरेशन तो सर तैयारी तो ठीक है, टेक्निकली नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं, तो वी विल चेक. तो आपको जब पूरा चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है और कैसे आपका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है. ये अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, गाइस. जो भी आपका 24 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, दिल्ली में मैंने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया है, I want to share so that you will get the results. Okay? और रिजल्ट्स के लिए पढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना. और याद रखिएगा, इफ यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर व्हाट? हायर एजुकेशन इन व्हाट? IIT दिल्ली एंड सो ऑन. तो अगेन कैंपस प्लेसमेंट होगा. और अगर आपने कोई PSU निकाला तो भाई मिनिमम 10 to 12 लाख से ऊपर का पैकेज होगा. तो याद रखिए, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है ये. देन अब आते हैं जरा two-port H parameter of the model. Now watch this. It is called parallel connection, guys. 2 pi network are connected in parallel. If the 2 pi network are connected in parallel, then first of all we have to find what? Y parameters. What is the Y parameter for parallel connection? Y parameter of the first network, Y parameter of the second network, and you will get the overall Y parameter. Once you have the Y parameter, then you can find what? H parameter, that is H22. So what is the relation between H22 and what? Y parameter? Or we can apply the condition so that, now what is the H parameter? V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2, and I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. What is asked here? H22. H22 will become I2 upon V2 with the condition I1 is equal to what? 0. With condition I1 is equal to 0. Remember that condition is very, very, very important, guys. I1 is equal to 0. Okay. Now, so first of all, separate these two network. Separate these 2 pi network. We will get 1 pi network, another pi network. What is the first pi network?
3. So everyone tell me what will be the y11, y22 and so on for this network. Tell me. Second pi network. This is called pi network, guys. These two pi network are connected in parallel. Watch this. This is the V1. This is the V2. Voltage will remain same. This is the I1. And I1 is divided into two parts. I1A, I1B. Here again it is divided into two parts. I2A, I2B. And that's why we can say this is what? In a parallel. It is connected in parallel. This is the B network and that is the A network. Now, if you want to find the Y parameter for the A network, so normally students are doing again silly mistakes. They are taking what? 3 plus 3, it is 6. This is minus 3, this is minus 3, this is 6. Is it correct? Or what is the YB? 2 plus 2, YA plus YB, that is YA plus IB is equal to 4, minus YB minus 2, minus YB minus 2, and YB plus YC. YB plus YC, that is the 4. Right, remember. But this is, what is this? This is not a conductance. This is resistance, guys. So what is the conductance? 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3. Mho. And this is 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. Mho. And therefore this is wrong. This is wrong. So what is the YA, YB, YC? YA. YA plus YB. 1 by 3 plus 1 by 3, that is the 2 by 3. 1 by 3 plus 1 by 3, 2 by 3. Minus 1 by 3. Minus 1 by 3. And 1 by 3 plus 1 by 3, 2 by 3. Dekho. This is Y12 and Y21 are equal and that's why it is a reciprocal network. And second, Y11 and Y22 are equal. Y11 and Y22 are equal and that's why this network is what? Electrically symmetrical. When we are watching from this, symmetrical. This is called electrically symmetrical. Now, second, what is the YB? One by 2 plus 1 by 2, that is a 1. YA plus YB 1. Minus 1 by 2. Minus 1 by 2. This is the minus YB. This is YB, na? This is ohm. This is mho. And 1 by 2, 1 by 2, it is 1. It is also electrically symmetrical network. Now we have YA and we have YB. So what is the overall Y? Overall Y is, you have to add these two. 2 by 3 plus 1. YA plus YB. 2 by 3 plus 1. Minus 1 by 3 minus 1 by 2. Minus 1 by 3 minus 1 by 2. 2 by 3 plus 1. This is the 2 by 3 plus 1. So calculation is what? Very simple. You have, once you have to add the 2 by 3 plus 1. What is the 2 by 3 plus 1? 5 by 3. And what is this? You can take the 6 as a LCM, minus 5 by 6. Na? 2 and what? 3? Minus 5 by 6. Minus 5 by 6. So what is the overall Y parameter? Sorry. What is the overall Y parameter for this? Two by 3 plus 1, that will become 5 by 3 and minus 5 by 6. Okay, this is 5 by 3, 6 as a LCM, 2 and 3, 5 by 6 and 5 by 3, 5 by symmetrical. Overall circuit is what? Symmetrical. Two networks are connected in parallel. Now second important thing, what is required? H parameter. What is required here? H parameter, guys. H22. What is the H22? I2 upon V2 with I1 0. So H22. So first of all, if you have the Y parameter, then you can write I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2.
and I2 is equal to y21 v1 plus y22 v2. y22 v2. Now for H22, what is the condition here? First of all, I2 upon V2 with I1 is equal to what? 0. I2 upon V2 with I1 is equal to 0. So I2 upon V2, this is the H22, I2 upon V2 with I1 is equal to what? 0. So there are two options. You can use the conversion formula. If suppose I am going to find the conversion formula for H22, then I1 is equal to 0. So when I am making the I1 is equal to 0, this is the I1 is equal to 0, you will get the relation y11 v1 plus y12 v2. So what is the v1 is equal to minus of y12 upon y11 v2. This is the v1 in terms of v2. Now you can replace here, so it will become I2 is equal to y21 v1. y21 v1, what is the v1? Minus y12 upon y11 into what? v2 plus y22 v2. Now you have to find H22. What is the H22? I2 upon v2. So what is the I2 upon v2 with I1 0? So I2, you can take the v2 common and you will get I2 upon V2 with I1 0, that is nothing but H22 Y21 Y12 with minus sign upon Y11 plus Y22 plus Y22 guys. और simply ये है मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, दिस इज द व्हेन वी आर सॉल्विंग इट विल बिकम y11 y22 minus y21 y12 upon what? y11. This is nothing but determinant of this matrix. This is nothing but determinant of this matrix. This is called conversion formula. But here it is a very typical thing. First of all, write the equation, then get the conversion formula, then finally you can find the value. Suppose you are going to put the value here. What is the y11? y11 and y22 are same. It will become 25 by 9. 5 by 3 multiplied by 5 by 3 minus y21 and y12 are also same, minus minus plus, and again it will become 25 minus 25 upon 36. 25 upon 36 divided by y11. What is the y11? 5 by 3. I will give you the shortcut also. Then you can take 36 as a LCM. It will become 25 into 4, 100 minus 25, that is the 75 by 36. ऊपर आ गया 75 by 36, नीचे आ जाएगा 5 by 3. तो you can say H22 is equal to (75 by 36 upon 5 by 3). 15 upon what? 12, or that is 15 divided by 12, that is the 5 by 4, 1.25 mho. 1.25 mho. That is a lengthy process. We have the conversion formula, and then if suppose you have the idea about the conversion formula, directly you can write this conversion formula. This is the H22, and directly you can write. Otherwise, there is a another method. If you want to solve this, then remember, no need to apply the conversion formula. First of all, put the value here. I1 is equal to 5 by 3 V1 minus 5 by 6 V2. I2 is equal to 5 minus 5 by 6 V1 minus 5 by plus 5 by 3 V2 plus 5 by 3 V2. Now what is required here? H22. What is the H22? I2 upon V2 with I1 is equal to 0.
with I1 is equal to 0. Now you can put the I1 is equal to 0. When I am putting the I1 is equal to 0, so from the first equation 5 cancel, and you will get V1 is equal to 5 cancel, and it will 0, 5 by 3 V1 minus 5 by 6 V2. This 5 is cancelled, and V1 will become V2 by 2. V1 will become V2 by 2. Now put this V2 by 2 in this equation. Put this V2 by 2 in the second equation. You will get I2 is equal to minus 5 by 6 into V2 by 2 plus 5 by 3 V2. Now what is I2 upon V2? I2 upon V2 will become, you can take 6 into 2, 12 as a LCM. It will become minus 5 plus 4 into 5, 20. And again you will get the 15 by 12. That is nothing but 5 by 4, 1.25 more. 1.25 more. Again we are getting the same answer. So no need to find the conversion. It is a lengthy. Right? Directly first, but guys, think about it. Think about it. This was the numerical in what, 2014. Parallel connection. From that you have to find the y parameters. Then what? From the y parameters you have to find the h parameters. Quickly you have to write the equations as quickly as possible. So then how is it possible? Minimum 5 times. I'm just giving you the assignment. Try to write it 5 times. Minimum 5 times, guys. What I want to say? For example, quickly write the first, what, Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. Right? This is the equation for Z parameters. Okay. Second, I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2. And I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. Right? Then third, ABCD parameter or H parameter. What is the H parameter? V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. Then guys, finally ABCD parameter, V1 is equal to A V2 minus B I2. And I1 is equal to C V2 minus D I2. Minimum how many times, guys? 5 times. Total 8 equation. Minimum 5 times. Now, when we are writing, you will get the equation. Tell me, guys, is it a right equation? Y11 is equal to what? 1 by Z11. Yes or no? Tell me. I am saying that Y11 is equal to what? 1 by Z11. If suppose you are writing the equation, you will get the idea whether it is right or wrong. Tell me yes or no. और कुछ तो comments दीजिए. Y11 is equal to 1 by Z11. That is correct? Yes or no? If suppose you are writing the equation on one single page, you can directly say what is the Z11. Z11 is V1 upon I1. Okay, no problem. And what is the Y11? Y11 is I1 upon V1. So you can say, sir, both are same. Yes, it is the reciprocal. It is a reciprocal of that. Because it is a V1 upon I1 or it is a I1 upon V1. But what is the condition? Condition क्या है? In this case, the condition is I2 is equal to 0. Means output open circuit. And in this case, what is the condition? V2 is equal to 0. Output is what? Short circuited. Output is what? Short circuited. And that's why we can't compare the Z11 and Y11 directly. We can't compare the Z11 and Y11 directly because the conditions are different. Because the conditions are different. Now, if you want to compare, then you can compare what? Suppose to get the Y11, we have to make the V2 0. Tell me, guys, we can compare with what? If you want to compare the Y11, you can compare with what? H11.
Why? To find the H11, we have to make the V2 0. To find the Y11, we have to make the V2 is equal to 0. Here you are getting the V1 upon I1 with V2 0. Here we are getting the I1 upon V1 with V2 is equal to 0. And that's why, what is the relation between Y11 and H11? H11 is equal to what? 1 by Y11. This is correct. H11 is equal to 1 by Y11. This is correct. This is correct. Why? Condition. Condition same. To find the H11, you have to make V2 0. To find the Y11, you have to make the V2 is equal to 0. And that's why we can say. So write minimum 5 times quickly as possible. Don't try to mug up. ये रट नहीं रहे भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं. कोई बोलेगा सर आखिर रट ही तो रहे. अरे रट क्या रहे हो? आप मुझसे 50 बार मिलोगे तो मेरा चेहरा देख के नाम बताओगे कि नहीं? व्हाट इज माय नेम? टेल मी गाइस. मान लीजिए आप मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो क्या आप मेरा नाम बता पाते हो? यस और नो? और अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं भी इंतजार करूंगा कि यार वो बालक नहीं आया, रुक जाओ. लोग बोल रहे हैं सर क्लास क्यों नहीं चालू कर रहे हो आप? अरे मैंने कहा थोड़ा रुको यार. बोले क्या हो गया सर? अरे रुक जाओ, थोड़ी देर वेट करते ना. अब मैं बता नहीं रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं. एक्चुअली मैं उसका इंतजार कर रहा हूं जो क्या है, रेगुलर है, कंसिस्टेंट है. क्योंकि ऐसे ही रोज लोग रिजल्ट देते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं. कहीं भी आप रहो, आपको कंसिस्टेंट रहना है. इट डजेंट मैटर कि आपका प्रिपरेशन कैसी है, क्या चल रही है. आप अगर लगे हुए हो, राइट डायरेक्शन पर हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएगा. लेकिन वो है ना दशरथ माझी जैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि पहाड़ को तोड़ना है मतलब तोड़ना है. फिर वो आपका प्रेम होना चाहिए भाई. अगर उतना आपका प्रेम है तो डेफिनेटली आप भी पहाड़ तोड़ोगे, आप भी गेट एग्जाम निकाल लोगे. जब इतना बड़ा पहाड़ टूट सकता है तो गेट तो बहुत ही छोटा मोटा एग्जाम है. इंजीनियरिंग सर्विसेज भी बहुत छोटा ही एग्जाम है उसके कंपैरिजन में जो डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है. ठीक है, तो आप अगर तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब आप मेरा नाम याद कर सकते हो 5 बार में, मैं आपको याद कर सकता हूं 5-6 बार में, तो भाई अगर इसको 5 बार लिखोगे तो क्या ये आपको भूल जाएगा या आप इसको भूल जाओगे? एग्जाम में याद आएगा ना भाई. और जब एग्जाम में तेजी से चीजें रिकॉल होती है, फॉर्मूला आपको तेजी से रिकॉल होता है, देन वी आर गिविंग द आवर बेस्ट. अब यार फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट को क्या कर लोगे? फिर से पूरा फॉर्मूला डिराइव करोगे क्या वहां पर? तो वो इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है. अब आप बताओ 2 into 8 तुरंत बोलोगे 16, राइट? 16 into 5 तुरंत बोलोगे 80, यस और नो? तो आप ऐसे ही बोलते हो ना 17 into 5 सर 85. इतना फास्ट कैसे बोल रहे हो? क्योंकि आप बचपन से वैसा पढ़ रहे हो. उसके लिए थोड़ी कैलकुलेटर निकाल देते. पता चला मैंने पूछा सर बता दो 2 into जैसे आपको मैंने पूछा, बोलो रुको सर क्या हो गया, कैलकुलेटर लाते हैं ना. अरे इसमें क्या कैलकुलेटर है, बचपन से पढ़ रहे हैं. अप टू 20 तक तो मिनिमम सबको टेबल याद होती है. मुझे याद है कि नहीं पता नहीं. देखो तो जरा इसका आंसर कितना होता है, राइट? 19 into 5. व्हाट इज द 19 into 5? अरे बता दो जरा, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि जितना आप चीजों को अपने दिमाग में अपना सेट करोगे, राइट? अभी बोलोगे सर आप लिख नहीं पा रहे हो. अरे ये लिख लेंगे यार, इधर उधर ट्रिक लगा के लिख लेंगे. इंजीनियर हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो लेकिन हमको टेबल याद होती है अप टू 20 तक, तो हम क्विकली सॉल्व कर पाते. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑन व्हाट डिपेंडेंट सोर्सेज. मैंने आपको कमिट किया था 1 क्वेश्चन ऑन डिपेंडेंट सोर्सेज, तो दैट इज द क्वेश्चन. अब आते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. तो आई थिंक मैसेज इज क्लियर. मतलब आप चीजों को इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो कि जो फॉर्मूला है ना वो आपको तेजी से रिकॉल हो जाए. और अगर उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आई एम गिविंग यू द सिंपल ट्रिक. आज ही अपनाओ. एक ना पूरा एक सीट में लिख लो फॉर्मूला. ड्राइंग सीट जो बनाते थे ना अपना इंजीनियरिंग में, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाते हैं, हाफ सीट कट करके या फुल सीट. हाफ सीट वैसे कंफर्टेबल है. हाफ सीट लो और एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने फॉर्मूले, फॉर एग्जांपल 2 पोर्ट नेटवर्क, तो 2 पोर्ट नेटवर्क में Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज पैरामीटर्स, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, सिमेट्री, व्हाट इज द लैटिस इक्विवेलेंट नेटवर्क, right? And what is the parallel connection, series connection, what is the relation between Z parameter and Y parameter and so on. तो आप देखोगे कि एक पूरी सीट में आ गई. उसको 10 दिन तक आप अपने नजर के सामने रखिए, 10 days में आपको याद हो जाएगा. And you will be able to recall all these formula during exam.
ऐसा होना चाहिए। कुछ कीजिए, मतलब आप सोचिए मत, बस निकल लीजिए, करते जाइए, कब आपका रिजल्ट आएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। अब आते हैं जरा, consider the two port network shown in the figure. Actually all the 4 y parameters are given here, means you have to find the y parameters and with dependent sources in 2021 2 marks question guys. देखो ये ना पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन अब आता है डिपेंडेंट पर, तो अब देखिए जरा क्या हो सकता है ये। Then again if you want to find the y parameters guys, you have to write the equations. I1 is equal to y11 v1 plus y12 v2. I2 is equal to y21 v1 plus y22 v2. चलिए अब आ जाओ जरा, आप कैसे बनाओगे इसको। भाई आपको पूछ रहा है क्या, मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि डायरेक्ट कंपेयर कर लूं, क्योंकि चारों पूछा है ना, एक आध नहीं पूछा, चारों पूछ लिया है, तो क्या हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सके। तो देखो यहाँ का जो नोड है ना, यहाँ का वोल्टेज है V1 और यहाँ है ना, यहाँ का नोड का वोल्टेज है V2। ये देखो ये V1 एंड V2 है, और ये इनकमिंग करंट है I1 और ये इनकमिंग करंट है I2। तो हम डायरेक्ट एक रिलेशन लिख सकते हैं, अगर हम लोग नोडल इक्वेशन लगा रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द इनकमिंग करंट I1, व्हाट इज द आउटगोइंग करंट V1 माइनस 0 by 1, दिस इज द आउटगोइंग करंट V1 माइनस V2 by 1, V1 माइनस V2 by 1। और ये देखो एक इनकमिंग भी आ गया है भाई 3V2, एक इनकमिंग भी है 3V2, और जब इनकमिंग करंट को आप इधर लिखते हो तो आप इधर लिखोगे 3V2। सम ऑफ द इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सम ऑफ द इनकमिंग इज इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग। तो आई एम राइटिंग द KCL एट दिस पॉइंट, I1 is the incoming, 3V2 is the incoming, V1 by 1, V1 minus V2 by 1 is the outgoing current। अब देखो what is I1, this will become V1 plus V1, this is the 2V1 minus V2, and that will become minus 3V2, minus 3V2। so what is the I1 is equal to 2V1 minus 4V2, 2V1 minus 4V2। can we compare with the first equation? So compare the first and third one, compare first and third one। So you will get y11 is equal to 2 and y12 is equal to 4, minus 4, minus 4। now if it is MCQ, first of all go through the 4 options। so when I am going through the 4 options, y11 is equal to 2, y22 is equal to minus, oh my god, option A, option B, option C, right? Means we have to find what other parameters, y11, y2 minus 4, 2 minus 4, 2 minus 4, then we have to find, this is wrong, this is not the answer, ABC, out of ABC 1 is correct, okay, no problem। then first we are comparing and we are finding the equation। now second, write down the KCL at this point। so I'm going to write the KCL at the second point। okay, अब यहां है what is the incoming current I2, what are the outgoing current V2 minus V1 by 1, V2 minus V1 by 1 and V2 by 1। now you can write I2 is equal to minus V1 plus 2V2। can we compare the equation number 4 with the equation number 2? so when I am comparing the equation number 4 with equation number 2, you will get y21 is equal to minus 1, y22 is equal to y22 is equal to 2, minus 1 and 2। now we have to check minus 1 and 2, minus 1 and 2 only in B option। so yet we are getting the 4 option merely by what, comparing, merely by comparing। are you getting my point everyone? तो कंपैरिजन किया आपने, डायरेक्ट इक्वेशन लिखा, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ पाई नेटवर्क गाइस।
When it is just like a pi network, you have to write simple KCL at this node and that node and compare it with the equations, and you will get all the 4 y parameters. In 2021 that was the question. तो पहला काम है इक्वेशन लिखना, उसके बाद सॉल्व करना. इज देयर इज एनी अदर मेथड? यस, देयर इज अनदर मेथड. यार जरा जो भी है सेशन में, सेशन को एक बार जरा लाइक कर लीजिएगा इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशन. सेकंड थिंग, शेयर कर लीजिएगा. और थर्ड इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और वो तो ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो चैनल, आपकी ऐप में जो फ्री क्लासेस हो रही है दैट इज द फ्री क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं ऑन अवर ऐप, जहां पर मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा. तो वर्चुअल कैलकुलेटर लेकर आना, पेन लेकर आना, और खुद भी आना. अपने दोस्तों को मत भेज देना, मतलब खुद भी आना, मतलब मेंटली वही रहना, माइंडफुलनेस, पूरे फुल अटेंशन के साथ. पता चला आप तो आ रहे हो लेकिन आपका ये नहीं आ रहा है, आपका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है, आपने फॉर्मेलिटीज में चालू कर दिया और बस टाइम पास कर रहे हो. ये ऐसा हर जगह कर रहे हो ना आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो दूसरा कुछ सोच रहे हो, और जब कुछ दूसरा कर रहे हो तो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो. ना वो एंजॉय कर रहे हो ना ये एंजॉय कर रहे हो. ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत डाइवर्जन है, समझ सकते हैं, है ना. हम ही लोग खुद डाइवर्ट हो जाते हैं, तो आप लोग तो बच्चे हो अभी. बच्चे तो खैर कोई भी, हम लोग सब जवान हो गए हैं. और ध्यान रखिएगा, वी ऑल आर एस्पिरेंट्स. आप भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए करते हैं, ठीक है ना. और अब आपको सब क्या है ना, कई कई क्लास में मैं देखता हूँ कंटिन्यूसली, और मेरे बच्चे और मेरे बच्चे. अरे मेरे बच्चे भाई, एक बात बताओ, किनको पढ़ा रहे हो आप? वी आर डीलिंग विद व्हाट, 18 years. मोस्टली स्टूडेंट्स आर मोर देन व्हाट 18 years. यस और नो, दे हैव वोटिंग राइट्स. और अगर मैं उनको बच्चे बच्चे, तो एक दिन बोलेगा सर आ जाओ, मैं आपको समझाता हूं, आपसे ज्यादा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मुझ में है. तो हो सकता है वो कई मामलों में हमसे भी तेज हो. हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पास, हमने इसको कंटिन्यूसली पढ़ा है और सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है. वैसे ही मैं मानता हूं कि किसी स्टूडेंट का ना कोई और चीज स्ट्रांग होगी. हो सकता है वो गेम्स में अच्छा हो सकता है वो किसी एआई वगैरह टूल्स में बहुत ज्यादा अच्छा हो, और हो सकता है उसकी कुछ स्किल ऐसी हो जो हमारे में नहीं है. तो विन विन सिचुएशन है, गिव एंड टेक. तो आपको लगता है कि यार मुझे यहां से कुछ चीज कंपैरेटिवली अच्छी मिलेगी, तो वे ओके कंटिन्यू. आपको लगता है कुछ नहीं मिलेगा, टाइम पास है, तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो. लेकिन हाँ, अरे तुरंत छोड़ने से पहले 5-6 क्लास अटेंड करके देखो कि फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है. उसके बावजूद भी लगता है कि इसमें दम नहीं है, समझ नहीं आ रही बात, छोड़. टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट. जहां आपको मैच होता है वहां जाइए, और लेकिन कंफ्यूज मत होइए. नाउ व्हाट इज द, जस्ट क्या आ सकता है सेकंड क्वेश्चन, जस्ट आई वांट टू से, फॉर एग्जांपल ओनली y12 is required. So if the only the y12 is required, guys, what is the y12? y12 is, or y11 is required. For example, only y11 is required. So what is the y11? So from this formula you can say, again you have to write the equation, because y11, what is the y11? I1 is equal to y11 v1 plus y12 v1 plus y12 v2. And y11 is required. What is the y11? I1 upon v1 with v2 is equal to 0. Condition: I1 upon v1 with v2 is equal to 0. Not think about it. If only y11 is required, so why you are finding all the 4 parameters? Apply the condition. If suppose I am going to make the v2 0, make it short circuit. If this v2 is 0, I2 is not 0, v2 is 0, then guys, what about this 3v2? It is also 0. It is a current source. So current source will act as open circuit. Now you can remove it. Current source act as open circuit, and that's why you can remove it. There is, because the v2 is 0, condition applied. Now you have to find the relation between what y11, I1 upon v1. So you can write, because this is 0 guys, this is 0, v2 is 0. So you can write what is the I1 is equal to v1 upon 1, this is the v1 upon 1, plus v2 v1 minus 0, this is 0, condition applied, upon 1. So it will become 2v1. So what is the I1 upon v1? 2.
what is the I1 upon V1, that is equal to 2 mho. So this is the value of what? Y11. No need to calculate all the 4 parameters. Unnecessary, we are wasting our time. तो आगे y1, ये देखिए जरा, what is the y11? 2 2 2. Okay, so that is the case. In numerical answer type question they will give like this. तो भाई try to solve the questions. Okay, tomorrow at 11 AM free class on what? Basics of network. आप हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर जाइए फ्री कोर्सेज में है काउंटडाउन कोर्सेज में आप जाएंगे लेक्चर 4, वहां पर आप 11 AM टुमारो ज्वाइन कर सकते हैं. वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स ऑफ नेटवर्क. बेसिक्स मींस व्हाट? सिंपल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. बट वी आर हैविंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिपेंडेंट सोर्सेज आल्सो, some previous year questions, right? Mostly the question from standard textbook. Then क्योंकि मैं यहाँ पे previous year question की सीरीज है ना, तो यहाँ पर चल रही है, तो वहां पर हम लोग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे from standard textbook. Okay, तो 11. And second thing, if you have any queries, any doubt regarding your preparation, directly you can message me at this number. I will give you the time. On that time we can discuss. 9899940096. Not only about the admission and so on, just if you have any queries, some problem with your preparation, right? And then you can ask, no problem. लेकिन हाँ थोड़ा वेट करना, ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम दूंगा मैं, जिस समय मैं फ्री रहूंगा तब मैं आपसे बात कर पाऊंगा. तो हम लोग बात करेंगे, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. ओके, लेकिन पूरा अपना डिटेल भेजिए. एंड और साथ में ना डिटेल में मैं आपको और भी कुछ पूछूंगा, वो वहां पर हम लोग बात करेंगे, तो वहां मैं वो डिटेल पूछूंगा, उसका सही सही जवाब देना. इट इज ऑफ जस्ट प्रॉपर काउंसलिंग कि कहां पर प्रॉब्लम आती है और हम क्यों क्लियर नहीं कर पाते. आई हैव क्लियर्ड ऑल दिस एग्जाम विद सेल्फ स्टडी गाइस, ऑल टेक्निकल एग्जाम्स, राइट? यू कैन ऑल्सो क्लियर. तो ये है. एंड जो जानना चाहते हैं वो दैट इज यू कैन गो थ्रू अवर दैट, एंड वी हैव द कोर्सेस, काउंटडाउन कोर्स, दैट इज द नथिंग बट क्रैश कोर्स, स्पेशल 5 for electrical instrumentation and special 5 for electronics. For more detail, go through our course, go through the fee structure and so on. Okay, but remember you have to attend what? Live classes. Try to attend mostly, so that you can interact with me. ये interaction important है, ना कि content. Content तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन वो proper interaction के लिए मैंने ये क्लास अरेंज की है, ताकि आप समझ सको कि रिजल्ट्स आते कैसे हैं. Okay then, thank you for attending the session guys. Thank you very much. Subscribe our channel, share the link of this session. Thank you.